गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछले क्लासेस में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कुछ ग्राफ्स और आइंस्टीन इक्वेशन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा एक रिकैप कर ले रहे हैं कि एनर्जी जो है, वी हैव कैलकुलेटेड द एनर्जी एंड एनर्जी विल बी इक्वल टू, वी कैन से दैट h nu, एनर्जी ऑफ फोटोन, we can say that hc by lambda, we can say that 1 2 का 400 upon lambda angstrom, this value will be in ev, and 1240 by lambda nm, this will be in ev. Further E will be equal to w plus ke, Einstein equation of photoelectric effect, Einstein equation of photoelectric effect. And further we can say that if V naught will be a stopping potential, then Ke is equal to Pe, and that will be equal to Ev naught. So this equation gets modified. E will be equal to W plus Ev naught, and this further we can say that H nu, and this will be equal to H nu naught plus Ev naught. This also be a form to calculate energy. Further, if you want to convert this in terms of wavelength, then we can say that nu will be equal to hc by lambda, and further we can write this equation can written this form also, hc upon lambda, this will equal to hc upon lambda naught plus ev naught, and further 1 hc 1 by lambda minus 1 by lambda naught will be equal to ev naught. This also is forms of energy. So once the students will prepare this, एक बार बच्चा सभी एनर्जी के फॉर्म को दिमाग में फिट कर लेता है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल्स करना बहुत ही इजी हो जाता है और वो इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाता है। हमने देखा कुछ, अब हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और ये हमारे लिए बताता है डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। देखें, ये हम कर सकते हैं डी ब्रॉगली, इससे पहले पढ़ने से पहले हम कर सकते हैं कि some particles, subatomic particles, we can say that subatomic particles like electron, photon, etc, possess डुअल नेचर। इनकी नेचर हमारी कैसी है? डुअल नेचर है। ये हमारा बिहेव करते हैं। डुअल नेचर मीन्स वेव नेचर, एंड डुअल नेचर मीन्स इट बिहेव्स लाइक वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड वी कैन से दैट एज पार्टिकल नेचर। अब इसके सपोर्ट में क्या क्या फिनोमेना होंगे वेव के सपोर्ट में? जैसे हम कर सकते हैं यहाँ पर, दिस कैन शो द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, diffraction. So just like light shows this phenomena, the subatomic particles like electron and photon, that will also follow this phenomena. They can show this phenomena: reflection, refraction, interference, and diffraction. And therefore we can say that in this case the electron or the photons or such subatomic particles will behave as
waveform, and energy associated will be equal to h nu, where nu is the frequency. If they behave as a particle nature, then it shows the phenomena of photoelectric effect. Shows G-man effect, Stark effect. If the particle shows this phenomena, you are familiar with this photoelectric effect and Stark and G-man effect is. Stark effect is the splitting of a spectral lens under the influence of electric field, and G-man effect is splitting of a spectral lens under the influence of magnetic field. These are not in syllabus, but we have to know, और हमको जानना चाहिए कि हाँ ये दोनों भी फेनोमेना हमारा पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, और अगर ये पार्टिकल है तो उसके पास मास होगा, और यहाँ पर आइंस्टीन साहब बताएं कि E विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये हमारे दो इक्वेशन आए कि जब हमारा पार्टिकल बिहेव करेगा वेव की तरह तो उसके पास हमारे लिए एनर्जी होगा h न्यू, और जब वो बिहेव करेगा हमारे लिए पार्टिकल की तरह तो उसके पास हमारा होगा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो नेचर लव सिमेट्री, नेचर सिमेट्री चीजों को पसंद करता है, तो उस हिसाब से हमारा है इफ ए पार्टिकल शोज द फेनोमेना ऑफ वेव नेचर देन इट मे शो द फेनोमेना ऑफ पार्टिकल नेचर टू। एंड बोर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु बाय considering this developed a relation between these two, and you see the Bohr's equation. बोर के इक्वेशन में देखिए हमको क्या देखना है, ये हमारे बोर्स इक्वेशन। if a particle behave like wave, then energy will be E will be equal to h nu, or we can say nu equal to hc by lambda. This is equation 1. And if it shows particle nature, then E will be equal to mc square. From 1 and 2, this is for photon only, because we are using the speed of light. From 1 and 2, hc by lambda must be equal to mc square. This c will be cancelled by this c. The lambda will be equal to h upon mc. This is for photon, because photon travel with the speed of light. And for other particles like electron, lambda will be equal to h upon mv, or mv means momentum, lambda will be equal to h upon p, where p is momentum. If we plot a graph, this is also important relation. If we plot a graph between wavelength and momentum, lambda and p, then the graph will be like this, as lambda is inversely proportional to p, or lambda is inversely proportional to mv. So from this equation, if you have to plot the graph between lambda and velocity, then also the graph will be your like this only. So this is not Bohr's equation, but this is your De Broglie equation. De Broglie was the first scientist. This is the De Broglie equation, and De Broglie was the first scientist who gave this concept. So De Broglie has given the concept that a particle will behave as a dual nature, wave nature as well as particle nature, and therefore we have derived a relation from this that lambda will be inversely proportional to p, and we'll plot the graph like this.